Can you start, Spandana? Just start, no? Yes, Sakina. So welcome once again to the Unsung Hero session. We will start off with the introduction. So we have three panelists in the session today as usual. We'll start off with Mr. Ramesh Kumar. Ramesh Kumar is the founder and senior consultant at Nirmala Eye Care, Ranchi, Jharkhand. He completed his bachelor's in optometry from Pailan College of Management and Technology, Kolkata. He did College of Management and Technology, Kolkata. He did his 1-year internship from LV Prasad Eye Institute, Bhubaneswar. He has completed specialized training in low vision aids from LV Prasad, Hyderabad. So he has started recently to practice myopia control. Sakina, can we have the video of Mr. Ramesh Kumar's clinic, please? Yeah, sure. Mr. Ramesh Kumar, right? Yes. Went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Thank you, Sakina. So we'll move on to the second panelist, Mr. Kritarth Desai. He has done his Bachelor of Optometry from Harijot College of Optometry and M Optometry from Kargar ITM. He has worked with MNCs like Titan and in Himalaya as a corporate optometrist. He has worked as an assistant professor in Bharatiya College for 5 years. He worked in various hospitals in Surat. He had worked in Middle East for 3 years. He has participated in many camps in Africa and had conducted camps in Mauritius. He has been managing his own optometry clinic for the past 7 years. 2 years ago, he has started his 2 eye hospitals in collaboration with an ophthalmologist. Can we have the video of Mr. Kritarth, please? Spandana, can you please tell me whose video again, please? Mr. Kritarth Desai.
Thank you, Sakina. Moving on to the third panelist, Mr. Uday Prasad Tiwari. He has done his Bachelor of Optometry at Vinayaka Mission University, Salem. He has done his internship at Shankara Eye Hospital, Krishnan Koil. Later, he started working as an optometrist at Vision Express, Chennai. After a year, he did his postgraduate diploma in optometry and vision science at LV Prasad Eye Institute, Hyderabad, and has selected a comprehensive module as a part of his post-graduation. His project has been on adult myopia progression under the mentorship of Dr. Pavan at the Myopia Clinic at LV Prasad, Hyderabad. He has recently submitted the manuscript and is yet to be published. So after completing his post-graduation, he started his own practice named Swastik Eye Care and is offering comprehensive eye care in Guntur for the past 2 years. Welcome, Mr. Uday. And can we play the video of Mr. Uday Prasad Tiwari's clinic, Sakina? Yeah, sure. Thank you, Sakina. So without any further delay, we will start our discussions today. So we will start off with Mr. Ramesh Kumar. So what was your motivation to start your own practice? Thank you, madam, and thank you, OCI, for giving the opportunity. Actually, one of my friend, he's working with me. He always inspired and see the difference between employer and employee. He always look at the difference between employee and employee. So he inspired from my friend. We started my clinic in second phase of COVID time. So he's the most inspirational person to start the optometry clinic. Ma'am. Okay. So moving on to Mr. Kartak. So you had worked in corporate, you had worked in hospitals, and also you had been in academia. So which among these are very close to you? Hi, madam. Good afternoon, ma'am. Good And good afternoon. afternoon, everyone. Actually, I have already worked with corporate optical outlets, hospitals, and now we academic, and I have my own clinic also. But academic is one of my favorite one because पहले learn किया फिर earn किया, then now I have to give something. तो स्टूडेंट को मैं कुछ दे सकता हूँ. That is why academic पहली choice है. But I would like to work in clinical practice also. So the second choice is always a hospital or clinical part. कि भाई मैं पेशेंट को देखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ या मुझे ज्यादा पसंद है. Thank you, sir. So, Mr. Uday Tiwari, can we know what was your motivation to start your practice? Yeah, hi. Thank you very much for inviting for this. So the biggest motivation is like my dad. So he has started his own practice, and he motivated me to go in the same field, like, because from the beginning he's very interested in starting a new clinic by his own, but it has not happened yet. So he has opticals, which is under a doctor. So that has motivated me to start an own practice. So that's it. Yeah, he's Okay. the biggest motivation and inspiration. Good to hear that, Uday. So moving on to Mr. Ramesh Kumar. So your clinic is relatively new. And what are the strategies that you have been implementing so that the footfalls can increase and your practice gets visibility? Yes, ma'am. My clinic is relatively new,
And when we started the clinical practice, clinical optometric practice, at them we saw only red eye, because at that time mucormycosis is spreading. So everybody, if find red eye, supposed to go for find for a diagnosis of mucormycosis or not. So at that time, very difficult to run my clinic because lockdown is there, nobody is moving. So only red eye patients is seeing at that time. So second phase, I am starting the footfall. So first of we are starting the screening camp in a school eye screening camp and community eye screening camp. Further increase the footfall now. Okay. So community screenings helped you to increase your footfalls. Okay. Mr. Kritak, how was it working in the Middle East? And were you working in a hospital or a retail chain? And also the experience and learnings from there were helpful during your clinical setup? Yes, ma'am. I was there in Middle East for 3 years in Kuwait and Dubai. But most of the time, जो भी मुझे ये पूछता है question, I always reply like they have more. There is more respect for optometrists. Like उनके पास license है. Without optometrists, you can't open your optical outlets or you can't work in hospital. You have to crack their license exam. Then only you can practice in Middle East. But in India, it's thanks to OCI that OCI कर रहा है सब प्रैक्टिस वगैरह सब जो लाइन अप करने के लिए, तो उसकी वजह से आई होप कि फ्यूचर में सब रियली मिडिल ईस्ट जैसा होगा. बट द आप बोलो कि सर्विसेज लाइक आप मेडिकली कोई भी ले लो, आप ऑप्टिकल ले लो या ऑप्टोमेट्री ले लो या ऑफ्थेल का साइड ले लो या कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, इंडिया में ज्यादा आपको फैसिलिटी है कंपेयर टू अदर स्टेट्स. बट इंडिया में लाइसेंस वाला नहीं है तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट. बट वहां पे थोड़ा ये है कि ओसीआई जो है जैसे कर रहा है, जैसे अभी यहाँ पे गवर्नमेंट को करना चाहिए बट वो ओसीआई करता है. बट स्टिल वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लाइसेंस कि भाई या अपग्रेड है, नहीं कर सकते कि भाई वहां पे क्या है कि हर 2 साल पे आपको एग्जाम करेक्ट कर दिए हैं. तो वो इधर हो जाए तो थोड़ा लाइनअप हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है. Hopefully everything falls into place in due course of time. Mr. Uday, what were your challenges when you encountered while setting up your practice? Mr. Uday? Yeah. Sorry, a small disturbance. Yeah, please. Can you repeat the question? What were the challenges that you encountered while setting up your clinic? So, like, there are many challenges. So, like, not setting up in the clinic, but after I started a clinic, I have encountered a lot of issues. Like, first thing, patient recognition towards an optometrist. So they have a bit confusion, like he is like a doctor or someone who is a salesperson. That's the biggest thing we have to achieve from the patients. Like, so we have to change the mindset of them. So I think this is the biggest task we have to do in the startups. Yeah. Mr. Ramesh Kumar, what are the facilities that you offer at your clinic as of now? And we are first of all, we are providing a comprehensive eye care. In our city, only few optometrists and few ophthalmologists are available for doing retinoscopy. I am one of them. So pediatric refraction is also very less person. I am one of them. So I am basically doing comprehensive eye examination, pediatric refraction, low vision services. Recently, we have started the myopia control clinic,
including I started the vision therapy clinic. Add on them, I started the diabetic retinopathy screening clinic and glaucoma screening clinic. Yeah, that is good to know. So you have tie-ups with ophthalmologists so that you can refer the patients back to them? Yes, ma'am. I tap all ophthalmology specialty center like retina center for retina surgeons and cornea for cornea surgeons and glaucoma for glaucoma surgeons. I screen them, and if I find and if I patients also sufficient to refer the ophthalmologist, then I refer. Okay, okay. So to Kritat, how did you get an opportunity to participate in screenings in Africa and Mauritius? And what are the challenges that you encountered? And how are the community screenings there? Okay, madam. I was in 2009. I was with रोटरी इंस्टीट्यूट 2009 में जब रोटरी कैंप कर रहा था इन अफ्रीका सो मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला टू वर्क विथ रोटरी इंस्टीट्यूट इन दैट कैंप वहाँ पे हम लोग स्पेक्टिकल्स भी देते थे एज वेल एज ऑपरेशन भी करते थे वहाँ पे ऑफिशियल साथ में थे टीम ऑप्टोमेट्रिस्ट थे और अदर स्टाफ था तो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडिया में है वहाँ पे पॉवर्टी रेट इज मोर कंपेयर टू इंडिया बट वहाँ पे क्या था कि जैसे आप फॉर एग्जांपल समझ लो कि इट्स मुंबई तो पूरे मुंबई में एक ही ऑप्थेल है तो इसीलिए रोटरी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि वहां से हम लोग काम करेंगे अफ्रीका में फॉर कैंप्स एंड एवरीथिंग तो वहां से सिलेक्शन हुआ था मेरा इंटर्नशिप में था तब मैं तो इंटर्नशिप के बाद मुझे वहां से कैंप्स का एक्सपीरियंस था क्योंकि वहां पे रोटरी में बहुत सारे कैंप होते रहते थे विद इन अ वीक 2 to 3 कैंप एटलीस्ट वो लोग करते थे और उसके बाद इन 2014 में वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन मॉरिशियस तो उसकी वजह से मुझे वहां पे मॉरिशियस में कैंप करने का मौका मिला अगेन मॉरिशियस वैसे दिखने में अच्छी है बट वहां पे देयर इज अ poverty rate is मच मोर देन इंडिया सो वहां पे भी क्या है कि कैंप करने का मौका मिला एंड मैंने अराउंड 2 to 3 years तक मैंने वहां पे कैंप किया है and language barrier and license procedure and all this are there is a problem but क्या है कि like little bit हम लोग वो लैंग्वेज सीख लेते हैं like अफ्रीका में सीखा था मॉरिशस में सीखा था लाइक मिडल ईस्ट में था तो अरेबिक सीखा था थोड़ा एंड मॉरिशस में इतना दिक्कत नहीं था बिकॉज दे स्पीक हिंदी द सेकेंड लैंग्वेज इज हिंदी तो वो लोग वहां पे ज्यादा मैनेज हो सकता था कंपेयर टू अदर कंट्री Okay. So, Mr. Uday, we would like to know what are the key considerations that one has to take while setting up the clinic? Yeah. First of all, the biggest key consideration, like a stable mindset. Like at present, in recent days, I have observed many people who are starting in opticals. Within a year, they are ending and they are closing the clinics and they are going to the other fields like jobs or something. So stable is very much important thing. So in recent situations, setting and for a successful optical journey, I mean clinic journey, it will take time. So we have to wait for that. So confidence and stable is the biggest thing we have to, and we have to check for the area and first make a study of the things at what are the things you are going to do, like setting up a clinic or opticals and what are the things. And for regarding that, we have to find a better area. Make a study on the areas and what are the preferences you have to be. And later on, after setting the clinic, be stable on the place at what you are doing and be confident. That's the key important things we can, and you can move ahead. Yeah. Thank you, Uday. Thank you. So, Mr. Ramesh, what do you have you approached the ophthals for your optometric referrals? Since you have the vision clinic, myopia control clinic, and all that, have you approached the ophthalmologists in your area for referrals? And if so, how the response has been? Yes, I approached to the ophthalmologist, ma'am. Actually, I refer to the all
not improving visual patients to retina consultants, and they examine and investigation whatever their treatment are possible, they are given. After that, patient come back for me for low vision and visual rehabilitation, and also approach to cornea surgeon to refer and came back to orthocal lens trial lenses and myopia control glasses trial lens. Okay. So the overall response has been positive. So you get referrals from the ophthalmologist. Initially, response is very less in myopia, especially in myopia control clinic, because every body, even ophthalmologist, is feared about complications of contact lens. Okay, so now that it has improved? I improved in myopia control glasses, not even ortho and keratology contact lenses. Okay, okay. So moving on to Mr. Kritak, what are the challenges that you encounter in a rural setup, and how do you overcome those? ओके मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है या क्लिनिक है या ऑप्टोमेट्री क्लिनिक है या ऑप्टिकल आउटलेट है, तो मेजोरिटी आई वर्क इन रूरल एरिया और टाउन एरिया. पहला मेरा सिटी में था, बट ये मेरा होम टाउन है. एंड मेरे फादर जो है उसने बोला था कि लाइक वर्क फॉर, सिर्फ पैसे के लिए मत काम करो, थोड़ा विलेज की में जाओ, थोड़ा लोगों के लिए भी काम करो. ओके ठीक है, पैसा बनाओ. सो वहां से हम लोग जनरली कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि गांव होता है, वहां पे एक सरपंच होता है या मुखिया बोलते हैं जिसको, द हेड ऑफ दैट सिटी. तो उसको मिलते हैं, उनकी हेल्प से हम लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं. वहाँ पे स्पेक्टिकल फ्री में देते हैं या फ्री में ऑपरेशन करते हैं, आइदर थोड़ा पैसा कम करके या थोड़े रेगुलर रेंज में. जैसे क्या होता है कि नाउअडेज यू नो कि भाई कैटरेक्ट सर्जरीज आर कॉस्टली, तो वहां पे हम लोग थोड़े कम पैसे में हम लोग वो सर्जरी प्रोवाइड करते हैं, गुड क्वालिटी वाली. So moving on to Mr. Uday, so you said your father has been your motivation. So in what way his experience helped you in while setting up the practice? So the experience how to approach a customer. So from the beginning, he taught me like to be polite and hit the customers right. So in any situation, like you will get a different types of customers. Some will be like talking in a very silent way. Some will be very rude with you. In any condition, don't be rude by yourself. So be patient. At the end of the moment, you will get a good response from them. So, and the other things like the main help that he gave me only in the business side, how to sell, how to purchase the products, how you have to approach the customers, what are the strategies that you have to use to get a patient into your, how to increase your footfalls, and all these things that he helped me a lot to get the patients into my clinic and also the customers, right? Okay, okay. So Mr. Ramesh Kumar, are you pursuing your research interest now? Yes, ma'am. I am done one research work in optometry internship period at LV Prasad Eye Institute, Bhubaneswar, that is inter-observer variability in rebound eye care tonometer. Recently, I have started 1 month back. I have started the exposure keratitis on ICU patients of multi-specialty hospital with the help of ophthalmologist. Okay, okay, that is good to hear. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Mr. Kritak, you have multiple outlets and 2 clinics that are associated with a hospital. How do you manage these? We have around 19% of team, 2 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है एंड 2 ऑप्टोमेट्रिस्ट है. तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली हमने टाइमिंग फिक्स रखा है. लाइक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए हम लोग ओपीडी या वगैरह सब रखते हैं साइड में कि भाई ये सब, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे सर आने वाले हैं तो हम लाइन अप करके रखते हैं. सेकंड थिंग कि दूसरे जो भी ऑप्टिकल स्टोर्स है
वहां पे मेरा टाइमिंग और या मेरे दूसरे 2 ऑप्टोमेट्री से उसका टाइमिंग फिक्स है कि वो लोग वहां पे विजिट करते हैं। तो वो वहां पे सेल्समैन बोलता है कि अगर आई चेकअप कराना है तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का टाइमिंग ये है। तो वो उस टाइम पे जाके वहां पे जो भी पेशेंट होते हैं उसका, जैसे कि भाई रिफ्रैक्शन करना है, इधर कॉन्टेक्ट लेंस है, इधर ड्राइनेस का कोई इश्यू है, या कोई और ऑप्टोमेट्री रिलेटेड और क्लिनिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहां जाके वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं। फिर उसमें अगर सेकेंडरी या टर्सरी ट्रीटमेंट चाहिए तो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट भी उसको एक स्क्रीनिंग करके साइड में नंबर, नाम, वो सब लिख के वो लोग करते हैं, रेफरिंग करते हैं टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का भी डे फिक्स है कि उस दिन पे वो आएंगे और वो लोग उनके पास दिखा के चेकअप करवाएंगे कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब देख के फिर उसके बाद वो ऑपरेशन का या जो भी अदर ट्रीटमेंट चाहिए या कोई ड्रॉप्स दवाई चाहिए तो वो ऑप्थेल प्रिस्क्राइब करते हैं। So basically, everything works on a scheduled timing so that it is यस, easier to manage. यस, यस मैडम। So the setting up a clinic takes a lot of financial burden. So how did you manage your finances? So like basically the setting up a clinic is already pre-planned. So from the beginning, like nearly 10 to 15 years from the beginning, it had been planned. When I have joined my bachelor's, from the day onwards, it had been planned. So finance status is the first investor is my father. So he also has a whole stakes in this. So he is an investor and total thing has been done by him. So Mr. Ramesh Kumar, you have any plans of expansion of your clinic? Yes, ma'am. Recently, I am located in the center of the city, that is Ranchi, Jharkhand. And our next plan is to expand Vision Center in the periphery of the city, where we are providing comprehensive eye care in low-cost spectacles. Kritat, if we can ask you, what was the motivation factor to start an eye hospital? Okay. Basically वहाँ पे there are 2-3 factors. One of them is like कि भाई आप जहाँ पे क्वालिटी सर्विस नहीं मिल रही है या तो सर्विस मिल रही तो पैसे ज्यादा है, तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास या पूरा पीपल अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो सब रीजन के वजह से मैंने एक सोचा कि भाई एक थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में आप ऑपरेशन थिएटर बना सको या ऑपरेशन पेशेंट को करके दो, तो वो एक रीजन है। सेकेंडरी मेरा एरिया, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि क्या है कि मैंने ऑप्टोमेट्री स्टार्ट किया था इन 2004 और 5 तब ज्यादा ऑप्टोमेट्री के लिए मुझे नॉलेज नहीं था, तब मुझे ज्यादा इतना पता नहीं था। आफ्टर दैट जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया ये सब, तो मुझे पता चला कि ऑप्टोमेट्री में बहुत सारी ब्रांच है, लाइक यू कैन वर्क बहुत से क्लिनिकली ऑल्सो, वो सब। तो वहां पे बेसिकली मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब डॉक्टर्स हैं, तो मुझे पहले से ही क्लिनिकली प्रैक्टिस करना था। तो वहां पे मैंने सोचा कि सिर्फ चश्मे बेच के या वो सब का लिए सिर्फ ऑप्टोमेट्री नहीं है, लाइक यू कैन एक्चुअली सी पेशेंट, वहां पे उनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्योंकि जैसे मेरा स्टूडेंट था, जैसे मैं एकेडमिक में था, तो सब स्टूडेंट को मैं यही चीज बोलता था कि भाई एटलीस्ट आप क्लिनिकली प्रैक्टिस करो, थोड़ी करो, एटलीस्ट आपको पेशेंट रिस्पेक्ट मिलेगी भाई पेशेंट की तरफ से कि भाई ये सिर्फ चश्मे नहीं बेचते हैं, वो क्लिनिकली प्रैक्टिस भी करते हैं। वो जैसे पेशेंट को ड्राइनेस का प्रॉब्लम है या कुछ भी क्लिनिकली विजन थेरापी चाहिए या स्क्विंटिंग का प्रॉब्लम है, तो वो सब के लिए मैंने हॉस्पिटल का सोचा कि भाई एटलीस्ट पेशेंट आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, एटलीस्ट सोसाइटी में ऑप्टोमेट्री बढ़ेगा कि नहीं ये सिर्फ चश्मे बेचते नहीं है, चश्मे अच्छे बेचते हैं, उनका काम है, उसके लिए ये पढ़े हैं, बट साइड बाय साइड ये सब भी चीज है जो ऑप्टोमेट्री करता है। तो वो एक गोल था, और वो फर्स्ट वाला, 2 गोल मेन थे हॉस्पिटल चलाने के लिए। Okay. So, Mr. Uday, being a very relatively new eye care clinic, so what are the marketing strategies that you are employing, and what do you suggest? What are the strategies that will work to increase the patient count? Okay. So for the beginners, what I'm telling is
when you start, you have started a clinic right now. The next day onwards, your clinic has to be in the social media, in the Google. You have to first enter the details of your clinic, everything into the Google. So it will help a lot. And the second strategy is like a paper distribution. What I have done is from the beginning. So first I have entered into the Google as a first paid promotions and then non-paid promotions like. So, and then we have started a paper distributions. So pamphlet distributions by keeping a persons. And then we have started an advertisements, TV advertisements. So at present, right now, it's TV advertisements are running every month. So, and we are going to start a movie theater advertisements. Yeah, it's in a planning. So these are the strategies we are doing to develop the clinic. That's it. First thing I can tell is just keep your data into the Google. That's it. It will give you most advantage for you. So after all these promotions, you have seen an increase? Yeah, a very much increase. The footfall has been increased in a very much state. Yeah. So, Mr. Ramesh, what were the main hindrances stating the fact that you started your clinic during the second wave of COVID? So, what are the main challenges that you encountered? Actually, at that time, ma'am, market is not open. So public moving is very restricted. So और उस समय लोगों के पास ऐसा था कि जो पैसे थे पब्लिक के पास वो खर्च करना नहीं चाहते थे जब तक कि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ना आ जाए, क्योंकि पता नहीं था लोगों को कि आगे क्या होने वाला है, कोविड किस तरह स्प्रेड करेगा और मेरा स्थिति क्या होने वाला है। तो इकोनॉमिकल बर्डन उस समय बहुत ज्यादा था, क्योंकि पब्लिक मूव नहीं कर रहे हैं और न्यूली सेटअप में पब्लिक आना नहीं चाहते हैं जब तक कि उनका विश्वास न जीत ले। तो मेन हिंड्रेंस इकोनॉमिकल बर्डन बहुत था उस समय। बट जो हम ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं होते हैं कि बहुत लंबे समय तक वो सरवाइव कर सके, तो जो बेनिफिट था वो था पब्लिक टू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट का, उसका बेनिफिट मुझे मिला उस समय। So financial constraints were the main problem. So, Mr. Kritat, what are the challenges in starting an eye hospital? What did you encounter? बेसिकली आई हॉस्पिटल चालू करने के लिए बेसिकली दो चीज चाहिए। जो मेन थिंग इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्योंकि बेसिकली क्या है कि वी कांट ओपन हॉस्पिटल, सो वी हैव ऑलरेडी क्लिनिक। सो ऑप्थेल्मोलॉजी से वहाँ पे 2-3 मेरे फ्रेंड हैं, तो उनका एक तो लाइसेंस चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपको मेडिकल वेस्ट वो सब लाइसेंस चाहिए। थर्ड थिंग, हॉस्पिटल में ऑप्थेल वहां पे आने चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि जब आप सर्जिकल बात करते हैं एंड बोलेंगे कि लाइक यहाँ पे कोई आता है और सर्जरी करता है, तो माइट बी पेशेंट का ट्रस्ट इश्यू एक रहता है कि भाई यहाँ पे आप वो तो मिले नहीं ऑप्थेल, तो आप सर्जरी कैसे करेंगे। सो बेसिकली ऑप्थेल का विजिट होना जरूरी है कि भाई पेशेंट एक बार उनको मिले, बोले आप स्क्रीनिंग करके रखे कि भाई इसको कैटरेक्ट है या रेटिनल डिटैचमेंट है और वॉट एवर, तो वहां पे आके ऑप्थेल समझाएगा कि भाई ठीक है मैं सर्जन हूँ, आई विल डू सर्जरी एंड प्री और पोस्ट ऑफ थिंग वी कैन मैनेज। तो ये सब थोड़ी चीजें हैं जो वी हैव टू मैनेज इट, थोड़ा डिफिकल्ट है बट आई होप कि वो सबके सब कर सकते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। Okay. So, Mr. Uday, what are the facilities as of now that you are offering at your clinic, and what are your expansion plans? Mr. Uday, you are on mute. Yeah. So as of now, it's completely a comprehensive module, like dispensing the spectacles and the soft contact lens. And the expansion, like first we are going to start a myopia clinic. So it's ongoing process now, and then we can plan for specialty contact lens and the low vision thing. Yeah, it will take a step-by-step process and a bit time to start a specialty contact lens. Yeah.
So, Mr. Ramesh Kumar, what is the average number of patients that you see as of now? And in these 2 years, has the numbers increased? Yes, ma'am. In the starting phase, we saw only 1 to 2 patients per day. At then very difficult to survive. Now the footfall is approx 10 to 14 patients average per day. Mr. Kirtat, what did working in the corporate sector help you while setting up your opticals and your clinic? ओके मैम। बेसिकली मैम मेरा जो बैकग्राउंड है वो जॉब वाला है, जैसे मेरे फादर मदर सब जॉब वाले हैं। नोबडी डन बिजनेस या किसी के ऑप्टिकल है ऐसा कुछ नहीं है। सो द थिंग इज कि भाई मुझे सबसे पहले कॉर्पोरेट ज्वाइन करना था कि भाई थोड़ा हॉस्पिटल में था तो कॉर्पोरेट ऑप्टिकल जैसे मैंने बोला टाइटन किया, हिमालय में गया, तो वहां पे ये सब चीज सीखने को मिला कि लाइक आपका प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि भाई कस्टमर के साथ, कि भाई हॉस्पिटल में आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस का तो एक्सपोजर मिल जाता है, बट प्रोफेशनली जैसे वर्क करते हैं जैसे ऑप्टिकल आउटलेट में है या बड़ी बड़ी ऑप्टिकल शॉप में जो एक्सपोजर मिलता है, वो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड जो आता है बनता है, या पेशेंट को ट्रीट करने का तरीका एक सिखाया जाता है। एक उनके पास स्पेशल सेशन होते हैं, जैसे आप UCI जो है वो करता है अलग अलग सेशन कि भाई आप ये अपग्रेड नॉलेज के लिए, तो वो सब हेल्पफुल होता है। आप ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, तो उनका क्या होता है कि 3 4 6 महीने पे अपग्रेडेशन रहता है। तो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड सीखने को मिला। सेकेंडरी थिंग इज आप जैसे देखोगे कि लाइक अभी जितने भी कॉर्पोरेट ऑप्टिकल है या हॉस्पिटल है, उनके पास आप देखो कि एक ही मालिक है और उनके बहुत सारे ब्रांच है। तो वो अपने को लगता है कि लाइक कैसे चलाते होंगे कि भाई अपने से एक एम्प्लॉय नहीं आता है तो टेंशन हो जाता है कि यार अगर एम्प्लॉय नहीं है। वहां पे लगभग तकरीबन 40 40 50 50 ऑप्टिकल आउटलेट वो लोग चलाते हैं। तो हिमालय में या टाइटन में जब मैं था वहां पे उनके पास ये सीखने को मिला, क्योंकि टाइटन तो डायरेक्ट ऑनर नहीं था, बट हिमालय में मैंने ऑनर से काम किया हुआ है, कि वहां से मुझे ये सीखने को मिला कि वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, कि भाई टाइम टू टाइम सैलरी देना, स्टाफ को संभालना, सैलरी का स्ट्रक्चर डिसाइड करना कि भाई कैसे कैसे स्ट्रक्चर आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि वो सब बड़े बड़े फैक्टर्स है वहां पे। आपके जो स्टाफ है वो डिसअपॉइंट होते हैं। दूसरा कि आपका वर्क क्या है, कि भाई वर्क डिफाइन करना। वहाँ जब भी क्या होता है कि एम्प्लॉय को ले लेते हैं, बट आप उसको वर्क नहीं बता पाते हैं कि भाई ये चीज आपको करना है, या तो करने के बाद उसको ये लगता है कि ये मेरा काम नहीं था, वो उसका काम था। तो वो सब प्रोफेशनली जो सीखने को मिला वो कॉर्पोरेट में से मिला, कि वो लोग एक लाइन लिस्ट बना के देते हैं कि भाई इतना इतना काम आपके अंडर आता है, आपको ये करना है, और इतना इतना काम जो है वो अगर कोई बंदा नहीं होगा तो आपको ये भी करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट वहां पे क्या होता है कि अपने को सीखने को मिलता है, आइदर नहीं पता है तो वहां पे आपने सीख सकते हैं। ये सब चीजें मुझे मेरी जब ब्रांच चालू की, जैसे फर्स्ट ब्रांच थी वहां पे, तब मेरे पास ज्यादा ना तो पैसा था ना तो ऐसा कुछ था कि भाई नहीं बहुत एक्सपीरियंस से अपने कर लेंगे। बट धीरे 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 वो मुश्किलें आती गई। वो पहला स्टोर सेटअप किया, उसको ऑप्टोमेट्री क्लिनिक बनाया, क्योंकि वहां पे पहले तो थोड़ा पैसा बनाया कि भाई चलो ऑप्टिकल आउटलेट आया है उसको ऑप्टोमेट्री में कन्वर्ट करो। उसको थोड़ा रन किया। नाउ 5 ऑप्टिकल है, मैनेज हो रहा है, स्टाफ है। हॉस्पिटल बनाया कि भाई चलो कि सर्जन आएंगे तो उसका रूल क्या होगा, वो कब आएंगे, वो सब देख रहे थे। तो ये सब कॉर्पोरेट में से सीखने को मिला। So a lot of management skills learning has happened. Yes. So Uday, even you had been in corporate sector. Do you Yeah. agree with this learning? Yeah, I will agree with what he has told. So the journey in the corporate I have started. Basically, I have worked in my dad's opticals too. So there, I have completely attended the people who comes from the village. So attending people who comes from the village, in the sense the illiterate people, and attending the people who comes from the fully educated persons, completely there will be a different way of talk or way of dispensing it will be. So at that time I have felt that there is something is missing. So I have started a corporate job.
So where I have chosen a Vision Express. From there, I have got the knowledge how to be professional in attending the customers, where they will also approach us in a very professional way. So they know what they want. We don't want to discuss much with them. So they will already study in the Google and everything what the blue cut, what are the frames and all. And so in that way, it has helped me a lot, the corporate field. Yeah. So are you involved in community screening, Uday? So right now I have not. So just planning to involve in the community camps and so on. Sorry, you're in mute. Yeah. Sorry, being in a rural setup or Tier 2, Tier 3 city, what are the challenges that you face in terms of handling the patient or in terms of running the clinic? Yeah. So basically, right now the clinic that I have opened is not a rural area; it's in the city. Yeah. So, but the fathers opticals and the clinic, which has set in the rural area. So there, the challenges that they face is like the mindset of the people. We have to change them. We have to educate in a very difficult way. Yeah. Whatever you have, you may conclude. So they will be in certain mindset. So okay, so lenses are this and lenses are this much. So we have to change the mindset. The biggest task we will get is to sell a product to them. Yeah. Okay, then probably this question all of you can take one by one, starting with Ramesh Kumar. So, can you share a case where, as an optometrist, you have made a significant difference in a patient's life? You would have definitely encountered one such cases. If you can share with the audience, it will help us. So, it will. Yes, ma'am. I saw a 124-year girls. One eye is best corrected visual acuity 6/6 with -1 diopter, and other eye is -9 diopter, best corrected 6/9. He has started using glasses since the age of 9 years. Because of diplopia, no one give to full correction with spectacles. She visited to me, and I done the refraction, and I provide the contact lens in the worse eye and spectacles in the better eye. So she maintained the binocularity vision, and she is so happy. That's why, man. I made the difference in her life, man. So, if Mr. Krutat can share such a case. Yes, ma'am. Actually, पिछले since 2008 या 9 पिछले 12-15 साल में ऐसे बहुत सारे केसेस है, क्योंकि मैं बेसिकली रूरल में ज्यादा काम करता हूं, तो पिछले 7-8 साल में बहुत सारे केसेस है. जैसे यहाँ पे स्क्रीनिंग कम होता था, या तो होता था तो इतना एजुकेशन नहीं था, और फादर मदर थे, उनको इतना एजुकेशन नहीं है, तो वो लोग नहीं जाते थे. जैसे मैं हूँ या दूसरे हॉस्पिटल्स है, इसने जो स्क्रीनिंग कैंप चालू किए, मैं जनरली स्कूल कैंप्स करता हूँ, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पे हम लोग आई चेकअप करते हैं, उनको विजन पता चलता है, हम लोग क्लिनिक में बुलाते हैं, उसके बाद उसको पता चलता है कि भाई मुझे जो अभी तक दिख रहा था उससे मैं काफी अच्छा देख सकता हूँ. जैसे 2-3 पेशेंट थे मेरे, वो तो आज भी मेरे पास आते हैं कि भाई सर ये बच्चों को चेक कर दो, क्योंकि वो मेजोरिटी इश्यू था कि भाई मेरा बच्चा पढ़ने में सही नहीं है, क्योंकि उसको दिखता नहीं था, वो उनको नहीं पता था. जैसे ही उनको चश्मा लगा, उसको दिखने लगा, तो जो परसेंटेज थे वो थोड़े बड़े, तो उनको लगा कि नहीं ठीक है, चश्मे की वजह से लफड़ा था, ना कि दिमाग में लफड़ा था. और दूसरा चीज था, जैसे मैंने हॉस्पिटल खोला, मैंने जैसे आपको बोला कि करीबन 2.5 साल हो गए, तो वहां पे एक पेशेंट आया था, वो कंप्लीट ब्लाइंड था, उनको सिर्फ लाइट जा रही थी, मैच्योर कैटरेक्ट था, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट था. तो वहां पे जब हम लोग रूरल एरिया में से उनको लेके आए, तो वो लिटरली लकड़ी लेके वो सपोर्ट से चल रहा था. तो आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी उसने बोला कि मैंने तो ऐसा ही सोचा था कि मैं अंधा हो गया, एंड हिज विजन इज 6/9. वो उन्होंने बोला कि तकरीबन पिछले 3 से 4 साल से मुझे बहुत कम दिख रहा था, बट आफ्टर सर्जरी वहां पे 6/9 तक विजन चला गया था. तो ये सब थोड़ा एजुकेशन या स्क्रीनिंग से तो
हम लोग सपोर्टिव हो सकते हैं सोसाइटी के टूवर्ड्स. And Mr. Uday? Yeah. When I have started my clinic, I have met a child. So with his father. So basically, they are from the rural area. Okay. So he is using the glasses, but I have checked the vision with the glasses, and the vision is around very less vision. So I'm trying with the glasses and retinoscope and everything. Everything is fine, but the vision is not improved. So and later I have done a torch test. I have checked for RAPD. So RAPD is negative at that time. So I have asked the father. So basically, so he told that always we have gone through an opticals and a small stores, and there they will give the glasses and will tell that the kid will increase and the vision will be when the kid age is increased and the vision will be increased by itself. And they have convinced the patient like that. And from the beginning, he is using the same thing. So I have suggested, I have referred him to a neuro. So there he diagnosed with a cognitive disorder. So that's the thing I have done for one patient here. And there I have come to know that the preliminary examination, what we are doing, so it will shows you some diagnosis, not only doing like fundus and all. So a comprehensive and a basic test can make a big difference in the patients too. So it emphasizes the importance of comprehensive eye care, Yes. and as an optometrist, we can pick up certain things and do a timely referral. Yes. So that definitely makes a difference Yes. to the patient. So this another question is also a common question. So just wanted to know, how do you keep yourself updated? Do you attend or prefer to attend offline sessions or online sessions? Probably Ramesh Kumar can start. Yes, ma'am. Once in a year, I go to the conference physically and for upgradation. And mostly I attended the online course for upgradation. Day before yesterday, I also attended the online conference on diabetic retinopathy screening, how to screen the diabetic retinopathy. Ma'am. Mr. Kritak? यस मैम. बेसिकली जैसे क्या होता है कि नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ जॉब कि भाई हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते मेजोरिटी टाइम, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे पास में हो तो जाके जा सकते हैं फिजिकली. बट ऑनलाइन क्लासेस जो जैसे लेते हैं, जैसे ओसीआई करता है या अदर कॉर्पोरेट जैसे एसएलआर है या जाइस है, तो वो सुन के हम लोग अपग्रेड रह सकते हैं. सेकेंडरी थिंग कि जैसे बहुत सारे टीचर्स है या ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस है, वो सब देख के थोड़ा अपग्रेड रह सकते हैं कि भाई लेटेस्ट कुछ अपग्रेड है कि नहीं. आइदर जो जैसे प्रोफेसर है, जैसे एकेडमिक में, जैसे ऑप्टोमेट्री कॉलेज में जो प्रोफेसर है, उनके टच में रह के अपग्रेड कर सकते हैं कि भाई आपने कुछ नया कॉन्फ्रेंस में सीखा हो या वो कुछ हो, नोट हो या कुछ भी ऐसा कुछ वीडियो हो या सीडी हो या प्रोडक्ट हो, तो आप प्लीज फॉरवर्ड कीजिए, तो हम लोग वो नॉलेज अपडेट कर सकते हैं. क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अपने को रेगुलरली नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अपने थोड़े पीछे रह जाएंगे. तो ये सब जो ऑनलाइन सेशन है वो मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है कंपेयर टू फिजिकल सेशन, क्योंकि वो हम लोग को क्लिनिक का या हॉस्पिटल डिस्टर्ब नहीं होता है, एज वेल एज थोड़ा नॉलेज भी बढ़ता है. So Mr. Uday? Yeah. So for a private practitioners, attending an offline sessions is very difficult. So from my side, it will be very difficult of closing the shutter and going to the offline sessions. So how I planned is I will attend on all the online sessions. Like there are different platforms like OCA and OOLS, and there are different other platforms where they are giving a much knowledge what offline sessions are giving. Only the thing is there won't be a physical things. That's it. So we can, if it is possible, we can go for the offline. If not, we can cover with the online sessions. And it is very important to attend some. It is very important to attend the sessions what they are keeping on the platforms, right? So to update yourself. So sitting in a clinic where it will be very close for us what is happening in the outside.
and what are the things that are finding in the outside, what are the research things that are coming out. So attending these type of sessions will help you a lot to keep up to date for you, because some of the educated patients suddenly will arrive to you and will ask, sir, I have read about something, so what are the things that will happen in that? So if you're not up to date there, then the confidence level you will drop near the patient, and the confidence level on you from the patient will also be dropped. You are in mute. So it is very much necessary to keep yourself updated, and also clearly states that online platforms do help, especially for private practitioners who cannot take their time off their clinic. So another question which all of you can answer is like, what are the takeaways that the audience, so there are students that are practicing optometrists who are attending the session. So in terms of setting up the clinic or in terms of practice management, what are the 3 takeaways that you would like to give the audience, please? From my side, ma'am, it has started very less investment. Like you can purchase retinoscope, trial box, trial set, vision chart, slit lamp examination in 90 days if you are capable to do. Otherwise, you can skip the. So investment is very less, and manage you yourself, your clinic and optical as well as. So now you can start the clinic, and after running the clinic, you had the employee. Mr. Kritat? यस मैम, बेसिकली मैडम जब मैंने ऑप्टोमेट्री ज्वाइन किया था तो जैसे मैंने पहले बताया, आई डोंट नो कि क्या था ऑप्टोमेट्रिस। उसके बाद ऑप्टोमेट्री में मैंने जैसे पता चला कि यार को कि ऑप्टोमेट्रिस ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो बेसिकली मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं सर डॉक्टर लगेगा, सर डॉक्टर लगेगा। बट द थिंग इज, जब तक मेरे स्टूडेंट को जनरली जो प्रैक्टिस करते हैं उनको मैं बताता हूँ कि जब तक आप डॉक्टर लगेगा कि उसके पीछे जाओगे, तो मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को पहचानता हूँ जहाँ की पेशेंट नहीं भी होते हैं, और ऐसे भी है कि छोटे डॉक्टर है बट बहुत सारे पेशेंट है उनके पास। बट द थिंग इज, ऑप्टोमेट्रिस्ट जब तक सिर्फ चश्मा बेचने का मेरे को सिर्फ स्पेक्टिकल बेचना है, पैसा बनाना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करेगा, तब तक ये आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए पेशेंट की तरफ से कि भाई नहीं आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करो। मैंने हर स्टूडेंट को बोला हुआ है, एज वेल एज जो भी प्रैक्टिशनर्स है, मैं उनको बोलता हूँ कि एटलीस्ट डू क्लिनिकल प्रैक्टिस। आप 4 साल 6 साल पढ़ते हो, पीएचडी करते हो, आपको फार्मेक का नॉलेज है, आपको एनाटॉमी पता है, आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो सिर्फ आप फोकस करते हो चश्मा, ठीक है चश्मा उसकी जगह है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप वो ऑप्टोमेट्री नॉलेज आप अप्लाई करते हो सोसाइटी में, तो आप लोगों को तुरंत खुद सामने से बोलेंगे कि नहीं सर है, सर को आई चेकअप कर लिए जाना है, क्योंकि उनको एक डिफरेंस समझ में आएगा कि भाई सिर्फ चश्मा नहीं बेचते हैं, वो आपको आंखों के लिए गाइड भी करते हैं। अगर जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सीधा ऑप्थेल के लिए वो रिफर भी कर सकते हैं कि भाई सर प्लीज देख लीजिए ये प्रॉब्लम है, ऑप्थेल उसको ट्रीट करके वापस आपको सेंड कर सकता है कि ओके प्रॉब्लम सॉल्व है, आप उसका आगे का जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल लेजी आई है तो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि भाई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, आप आंख बंद करवाइए, इतना तो जज कर सकते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ये मेरे स्टूडेंट को या तो जो सुन रहे उनको ये बोलना चाहता हूँ कि डू क्लिनिकल प्रैक्टिस रदर देन सिर्फ ऑप्टिकल करना है, ठीक है ऑप्टिकल करो बट एटलीस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस साथ करो, तो ऑप्टोमेट्री का जो लेवल है वो अपडेट होगा। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हो या हम लोग हैं, तो सोसाइटी में एक लेवल बनाना चाहते हैं या लाइसेंस लाना चाहते हैं, वो सब प्रोसीजर और इजी होगी, क्योंकि सब ऑप्टोमेट्री क्लिनिक के लिए काम कर रहे हैं इसके लिए। So I agree with the Kritak what he has told. So from what I'm telling to the new entrepreneurs who are going to start an opticals here clinic and whatever. So we first don't think like by seeing some of the clinics and all, don't think that okay something is happening in the clinic and they are going big and bigger. So if you come on board, the scenario will be completely different. Okay, by seeing someone and getting into the onboard is completely different. So first wait and see what you are, and think that and first think at what level you are,
and what is lesser in you, like academic side and on optical side. One of the biggest luckiest thing for an optometrist has is he can manage both clinic and optical at the same time. So the knowledge that he had. So the first thing that at which place you are lesser, in an academic side or in an optical side. There is no any wrong thing of doing a job and coming back to the clinic session. I mean, keeping a private practice. So if you're weak at the academic session, go for the higher studies, or if you're weak at the optical session, do the job at some private companies, get an exposure and come back to the things what you are doing, and you can keep your own practice at that time. Yeah, that's what the thing I can tell to the new entrepreneurs or new persons. Yeah. Okay. So thank you all the panelists. So with the panelists, so we have panelists practicing myopia control, and also for the optometrists who are attending the session, I would like to give a gentle reminder about the OCI Advanced Myopia lecture series, which is going to start from February 18th. And thank you, panelists. Thank you for taking your time off the clinic and sharing your experiences and learnings with the audience. So optometry offers a diverse career options. So let us introspect and choose the one that interests us and contribute to the society and the profession. So thank you one and all for your time and attending this session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, OCI.